See, I am continuing with my next video, rules for factorization. Just I am repeating. So, if last term is having plus sign, middle term is having sign plus sign, both the factor sign will be plus. If last term is having plus sign and middle term is having minus sign, both the factor sign will be minus. If last term is having minus sign, middle term is having plus sign, 1 plus and 1 minus. Last term is having minus, middle term is having minus, 1 plus minus sign. If last term is having plus sign, you have to add up to get the middle term. Last term is having minus sign, you have to subtract to get the middle term. Okay, now in this case, if last term is plus, middle term is a plus, both the factors will be plus. Okay, लास्ट में प्लस है इसीलिए ऐड किया तो मिडिल टर्म आना चाहिए. ओके, सेकेंड केस में लास्ट माइनस में माइनस साइन हो तो आपको आंख बंद करके एक प्लस एक माइनस साइन ले लेने का. ओके, उसमें फिर क्या करना है, देन विच साइन प्ले विल बी प्लस विच साइन विल बी, दैट डिपेंड्स ऑन द मिडिल टर्म. ओके, हियर मी फर्स्ट केस में हियर मिडिल टर्म इज हैविंग प्लस साइन, सो हियर दिस number I am highlighting with the red color. So, greater number sign will be plus and smaller number sign will be minus. Okay, now in this supposing last में minus हो तो आंख बंद करके एक plus एक minus लेने का. But in the second case green I am highlighting, here minus sign is there middle term. So, you have to take the greater number sign as the minus. These are the rules. Okay, let us take one example in this. In this, let us take example 6x square plus 23x plus 20. Here last term and middle term and last term. Last term plus middle term plus. So, what we have learned, both the factors will be plus. Those factors ढूंढने का नाम कैसे ढूंढने का नाम, multiply 6 into 20. 6 into 20 is 120. Okay, 120. 6 into 20 is 120. Now, you have to choose two numbers such that if you multiply, you have to get 120 and if you add up, मिडिल टर्म आना चाहिए. क्योंकि मैंने क्या बोली, लास्ट में प्लस साइन हो तो ऐड किया तो मिडिल टर्म आना चाहिए. ओके, मल्टीप्लाई किया तो 120 आना चाहिए, ऐड किया तो आपका ये 23 आना चाहिए. सो नाउ लेट अस ट्राई. 260 120 है, बट 60 प्लस 2 62, इट इज़ नॉट पॉसिबल है. नाउ 340 3 into 40 120, but 40 plus 3 is equal to 43, so A भी नहीं possible है. Okay, next 4 है, 4 टेबल में 4 30s यहाँ 120 4 30s बट 30 plus 4 34 पॉसिबल नहीं है. ओके, 5 का ले लो, 5 2s 10, 5 4s 24, 5s यहाँ भी 29 आ रहे हैं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है. ओके, 25 नेक्स्ट इज 6 तो ऑलरेडी हो गए. 6 into 20, 6 plus 20 plus 6 26 here also. 7 टेबल में तो 120 आती नहीं है. सो 15 8s 120, सो 15 plus 8 23 पॉसिबल है. सो हमको कौन सी लेने का, 15 and 8. Got it? So we will be taking what we will be taking 15 and 8 just because with all we have tried, but it was not satisfying. If you multiply, you have to get the last term, and if you add up, you have to get the middle term. So what are our factors, 15 and 8? Because 15 plus 8 is equal to 23. Now in the place of 23, I will be substituting this 56x square. Okay, 15x plus 8x plus 20. Okay, now this 15 or 8 we have to substitute in the place of 20. Now this divided into two cases.
दो में डिवाइड कर दो, 6 और 15 विच इज़ द कॉमन, 3 is the common, so 3 and common, x also common, so bring out 3x. ओके, नाउ 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किए थे, x आती है, इसको लिख रहे हैं हम लोग. 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 2 ज़ा 6 तो आ गई. इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस यू हैव टू गेट दिस 2 कॉमन वी आर टेकिंग आउट. नाउ 1x इज देयर inside, we need here 2x square, so we will be taking 1 here. So next is 15, already x तो है यहाँ बाहर, so only we will be taking 5 here, because if you multiply this you have to get, देखो 3 into 2 6, x into x square, this we are getting 3 into 5 15, x we are getting here. Now in the same way here plus sign is there, whatever sign is there that you take here. Okay, now 8 and 20, what is the common number? Common is 4, 4 table में आते हैं दोनों. Now 4 you take out, with what number if you multiply? You will be getting 8 here, 4 2s are. Okay, then 20 5s are. Now always these two should be same here. Then your factorization is correct. Then we will be writing here 3x plus 4 plus 2x plus 5. So that is why I taught you, वहाँ साइंस सिखाई है आपको, साइंस के हिसाब से आपको जाने का. Now these are the factors. Now you take one more example. Let us take example 10x square, second one. I will take one example, 12x square plus x minus 6. Okay, 12x square minus 6. Now here last में minus sign है, so when I told you whenever last minus sign हो तो आपको एक प्लस एक माइनस लेने का. Okay, now we have to take, I told you, when you take 1 plus and 1 minus before finding the factor, जैसे आपको लास्ट में माइनस साइन है, एक बाजू लिख लो एक प्लस माइनस, बिकॉज हम लोगों को 1 factor sign should be plus and 1 factor sign should be minus. Now middle term is having plus sign, so here round करो, ग्रेटर नंबर का प्लस साइन आएगी, माइनस साइन आएगी. नाउ फैक्टर्स ढूंढना है आपको. 12 6 72. Okay, now if you 72, 12 6 72. Now if you now last term is having minus sign. In the previous case last term was having plus sign. So we added to get the middle term. अगर लास्ट साइन माइनस हो तो आपको सब्ट्रैक्ट कर किए तो मिडिल टर्म आना चाहिए. मिडिल टर्म का वैल्यू कितना है, 1 है यहाँ. ओके, आपको कैसे अभी 72 लाना है, आपको मल्टीप्लाई किया तो 72 लाना है. ओके, और सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 1 आना चाहिए. एक केस में सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आना चाहिए. कहें फर्स्ट 236 नाउ ऐसे ले सकते आप, एक एक मेथड है. 236 36 2 माइनस पॉसिबल नहीं है. ओके, 2 18 नहीं पॉसिबल है. 2 2 नाउ ऐसे मल्टीप्लाई करने का, 2 2 4 माइनस 18 नहीं पॉसिबल है. ओके, नाउ 2 9 नो ले लो अभी. 2 2 4 4 2 8. ओके, now here 9 you are getting, 9 minus 8 is possible. So what are the factors 9 minus 8? Okay, so अभी हम लोग ले लेंगे 72 is equal to 9 8 72. Okay, 9 minus 8 1 आ गए. These are the factors. मैंने बताया आपको लास्ट माइनस साइन है, इसीलिए एक का फैक्टर प्लस लेने का, एक का माइनस लेने का. किसका प्लस लेने का, किस का लेने का, दैट डिपेंड्स ऑन द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म इज हैविंग प्लस साइन, सो इसका साइन होगा प्लस और इसका साइन होगा माइनस. सो वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग इन प्लेस ऑफ 1. ओके, नाउ इन द सेकेंड स्टेप वी विल बी डूइंग सेम.
12x square plus 9x, bigger number always line for minus, in place of plus 1x we are writing at and minus 6. ओके अभी नाउ ये दो में डिवाइड कर दो उसको, ये दोनों एक बाजू एक दोनों एक बाजू। नाउ ये फर्स्ट और इसमें 12 और 9 दोनों एक टेबल में आना चाहिए। कौन सी टेबल है वो? 3। ओके दोनों में कॉमन 3 है, x भी कॉमन है, x लेके आए। नाउ ये लाना चाहिए हमको। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आती है 4। ओके 1x इज देयर, दूसरा x पता है x, प्लस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आती हैं 3, बिकॉज यर वाई वी हैव टेकन x, यर x स्क्वायर इज देयर, हमारे पास बाहर एक ही x है। सो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको ये आना चाहिए 3 इंटू 4 12, x इंटू x स्क्वायर आ गए। ओके नाउ इन द सेम वे 3 इंटू 3 9, x इंटू 1 x। ओके नाउ ये लिए तो अब यहाँ जो भी साइन है ले लो माइनस। 8 और 6 कौन सी टेबल में आते हैं? 2 टेबल में आते हैं। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आती है 4x। ओके नाउ यहाँ माइनस साइन है, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको ये साइन आना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ माइनस ले लूँ तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, इसीलिए मैं ले लूँगी यहाँ प्लस साइन, बिकॉज माइनस प्लस माइनस। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस यू हैव टू गेट दिस, दैट इज़ वाई 2 इंटू 4 8, ओके 8x प्लस माइनस माइनस यहाँ। नाउ माइनस प्लस minus, minus and plus this minus sign and 3 here. Okay, so again I am writing here 3x into 4x plus 3 minus 2 4x plus 3. So what I told to know whether your these two should be same. अगर एक में माइनस एक में प्लस आए मतलब आपका गलत है। ओके इसीलिए क्या करने का आपको ये सेम आना चाहिए। अभी कैसे लिखेंगे? 3x माइनस 2, ये दोनों के साथ में जो कॉमन है उसको ले लेने का आपको, 4x प्लस 3। ओके नाउ दिस इज द फैक्टर, दिस है। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट ले लेंगे और एक एग्जाम्पल सिखाती हूँ आपको। थर्ड एग्जाम्पल 2x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 35। ओके जैसे लिए है आपको पहले ले लो, कौन सी लास्ट में माइनस साइन है, सो लास्ट में माइनस साइन करके एक प्लस और एक माइनस आएगी, हाईलाइट कर दो। ओके नाउ देन मिडिल टर्म देख लो, मिडिल टर्म का साइन माइनस है, सो यहाँ आपका ग्रेटर नंबर का साइन माइनस आएगी। ओके तो हमारा साइंस तो अभी आ गए हैं, फिर लास्ट में माइनस साइन है इसीलिए आपको सब्ट्रैक्ट किया तो मिडिल टर्म आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मिडिल टर्म में क्या है? 9। नाउ मल्टीप्लाई करो, ये 35 2 ज़ा 70, मतलब दो नंबर को आपको ऐसे लेने का, मल्टीप्लाई किया तो 70 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट किया तो, बिकॉज लास्ट टर्म इज हैविंग माइनस साइन, सो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट यू हैव टू गेट द मिडिल टर्म। ओके नाउ कैसे लेंगे आप इसको? देखो 2 35 ज़ा 70, 35 माइनस 2 नहीं पॉसिबल है। ओके 3 30 ज़ा सो 35 नहीं पॉसिबल है। ओके नाउ 7 का ले लो आप, 70, 2 35 नहीं पॉसिबल है। नाउ 5 7 ज़ा, ओके 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 7 नहीं होती है। ओके अभी तब फैक्टर्स चेंज करने का आपको, पहले हम लोग ले लेंगे, पहले हम लोग लेंगे 5, मतलब ये इसको लाने के लिए फैक्टर्स को हम लोग रीशफल कर सकते हैं। 5 लिया तो यहाँ आएगी 5 2 ज़ा सॉरी 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा आ गए ना, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ऐसे यू कैन रीशफल द फैक्टर्स टू गेट द 15 माइनस 4। सो नाउ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो आप। ओके
what are the factors? 15 and 4. Okay, now here middle term is having minus sign. So we will be taking this iska sign minus or iska sign plus, because the sign we will be taking that depends on the middle term. Now let us write here 2x square minus 15x plus 4x minus 35. Now if divide it, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है x के सिवा, सो वी विल बी टेकिंग x आउट. सो विल बी गेटिंग x, एक x तो बाहर ले लिया इसीलिए दो में से बाहर चले गए, एक ही x रहेगी minus 15. Now here also no common factor, so plus 1, only 1 is there. One common, nothing common means 1 ले लेने का आपको. Okay, 15 plus minus 15, 4 now. 2x square minus 15x minus or plus 2x square minus 9x minus 35. So what are the our factors? 35 2s are 70, 15 4s are 70. Okay, now let me write again here. Okay, okay, 2x square minus 15x plus 4x minus 35. Okay, now here common is x is common, so we will be writing it as 2x square. Here x let us take 2x minus 15. Now, 1 minute. 5 1s are 5, 5 4s are 20, 14 and 5. Sorry, 14 and 5 are factors. Here we have done wrong. See, 2, here 2 is there, 2 5s are 70. Okay, now 70 ka 1 plus 1 minus sign we have to take. Then 70 is, if you 5 1s are 5, okay, 5 4s are 20, 14 or 5. So bigger number will be, now 70 can be written as, now here 70 can be written as 15 and 4. What we have got here? 70 is equal to 5 1s are 5 4s are 14 and 5. By mistake I have taken them. So 2x square, okay, minus 4, because minus sign, middle term is having minus sign, so minus 14x plus 5x minus 35. Okay, now common ले लो यहाँ common, 2x is common. So we will be taking 2x minus 7, because 2x into 1 2x square, 2 into 7 14x square. Then plus sign है, 5 और 30 में common क्या है? 5. So यहाँ x minus 7. So 2x plus 5, x minus 7 are the factors. Okay, like that you have to factorize.